IIMs में जाके आपको इन सम सेंस अपनी औकात पता चल जाती है बिकॉज देर आर IITians गलोर। तो आपको लगता है कि यार ये तो IIT दिल्ली के लड़के तुमको हैं। तो पहले से ही फोबिया था कि जेई तो मेरे से क्रैक नहीं हुआ, तो वो लोग सब तो क्या तोड़ू लोग हैं। वो तो सब तोड़ू लोग हैं। You got into investment banking. Now, was that a conscious choice कि नहीं investment banking में ही करना है? Because again, within finance there are multiple opportunities and options. You could have decided to work in the markets. You could have decided to go for research, risk. So was it a decision based on money? Was it a decision based on glamour, or was it that it just happened to you? You didn't even plan it. IMB is where a phase of my life started where unlike in the past I started having these notions कि यार ये तो करना है, ये तो करना है। तो I went into IIM Bangalore very clear कि finance करना है। Lot of people I met said कि you should not be so fixated on something. You should look at multiple options. And honestly, if you ask me, that's a great advice. So if there are two choices you make in your career, if you know very well what you want to do, please follow that. But otherwise, if there is something to try out, don't be closed about it. That's, if you ask me, I look back at that phase of my life and always say ki yaar, what if I was more open to trying out more things? Would I have found something else also? Which is not to say I didn't have a good time. I enjoyed my time in investment banking, and I'll come to how that decision got taken. But yes, so I went in saying कि यार finance करना है. Lot of seniors said कि यार ये देख लेना, summers करना. There is so much. The world is out there for you to try. So summers का time आया. I was from, as Ankit rightly put it, not the branded institute. IIMs में जाके आपको in some sense अपनी औकात पता चल जाती है because there are IITians galore. तो आपको लगता है कि यार ये तो IIT दिल्ली के लड़के हैं। तुमको तो पहले से ही फोबिया था कि जेई तो मेरे से क्रैक नहीं हुआ, तो वो लोग सब तो क्या तोड़ू लोग हैं। वो तो सब तोड़ू लोग हैं। तो भाई पहुंच गए फिर, एंड यू दैट सम काइंड ऑफ इन्फीरियोरिटी तो थी घुसते समय कि भाई कौन से तो कॉलेज से हम आए हुए हैं, हमको क्या आता है, ये तो IITians, ये तो स्टड लोग हैं, ये सब फोड़ लेंगे। एंड देयर अगेन द सेम थिंग रिपीटेड लाइक माई फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग कि पता नहीं कहाँ से नंबर आ गया, आई एंडेड अप बीइंग सेकंड इन कॉलेज अगेन। ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का बड़ा अच्छा लकी चार्म है, मैं सेकंड आता हूँ, उसके बाद सब स्टोरी वहाँ से ख़त्म होनी शुरू होती है। सो देन सडनली अगेन वो बिलीफ आ जाता है कि इन लोगों में भी ये IITians हैं, इनका पढ़ने वढ़ने का मन नहीं है, या शायद ये लोग अब मस्ती के फेज़ में हैं, तो चलो यार चुपचाप सर झुका के नंबर लाना चाहोगे तो नंबर आ जाएंगे, द गेमिफिकेशन। सो बट फाइनेंस वॉज सेट, समर्स आ गए। Summers happen very close to the first term getting over, or just after the first term, but you're not allowed to release your grades. That was my biggest complaint then कि यार मेरे पास तो grades के सिवा कुछ है ही नहीं, मुझे बता तो देने दो सामने वाले को कि मेरी क्या grades हैं, but that was not allowed. Summers आए, day zero shortlist. In those days, day zero was 4 or 5 companies, didn't get any shortlist for obvious reasons. College नहीं था, background नहीं था, grades allowed नहीं थे. डे ज़ीरो चला गया, डे वन में शॉर्टलिस्ट आई तो 2, PNG और लीवर्स, दोनों मार्केटिंग कंपनी। तो एक में GD से निकाल दिया गया, GD होने के बाद मतलब लीवर्स में से। PNG में थैंकफुली इट वाज अ फाइनेंस प्रोफाइल, दे यूज्ड टू कम फॉर मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च एंड फाइनेंस। देयर वर सम 4 राउंड्स, 5 राउंड्स, 6 राउंड्स चले जा रहा है, मैं भी इंटरव्यू दिए जा रहा हूँ। फाइनली एंड में जाके दे हैड टू चूज 4 out of 5 पीपल, एंड योर्स ट्रूली वाज किक्ड आउट विद सम रीजनिंग कि तुम्हारे पास कोई लीडरशिप रोल नहीं है लाइफ में। ठीक है भाई, तो वो करते निकाल दिया गया। अब हालत हो गई ख़राब कि डे ज़ीरो निकल गया, डे वन निकल गया, नौकरी तो मिली नहीं है, अब तक करोगे क्या तुम लाइफ में। समवन हैड दिस स्मार्ट आइडिया दैट दे वॉकड अप टू कोटक. कोटक हैड कम फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन दोज डेज इट यूज्ड टू बी अ डे 2 कंपनी, एंड दे वॉकड अप टू कोटक एंड सेड कि यार तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया था, उसमें अच्छे नंबर आ गए थे, एंड पीपल जनरली ऑन कैंपस ऑन इन बैचेज यू स्टार्ट गेटिंग ब्रांडेड वेरी सून। तो वो ब्रांडिंग हो गई थी कि इसका कॉर्पोरेट फाइनेंस में ठीक नंबर है, इसको फाइनेंस करना है। तो समवन वॉकड अप टू देम एंड टोल्ड देम कि मतलब यू आर नॉट अलाउड टू नो अबाउट ग्रेड्स एंड ऑल दैट, बट ये लड़का अच्छा है। तो उसने बुला लिया मुझे इंटरव्यू के लिए, उसने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। PPT में बैठा ही नहीं था जाके, तो पता क्या होगा, तो उसको कुछ तो गोली दे के आ गया, बट बिकॉज दे वर टोल्ड कि बंदा ठीक है, जो भी कोर्स रिलेटेड पूछा था वो ठीक ठाक आता था। तो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में
summers लग गई थी. And that was in some sense, while finance is what I wanted to do, investment banking was not set at the time of summers. And then I went for my summers for 2 months, and again that next level of fixation कि अब तो करेंगे तो लाइफ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करेंगे और कुछ करनी नहीं है हमको. नंबर ठीक आ रहे थे. No, but it's also that at that point of time, given where Indian economy was, investment banking was that lucrative as a. I mean, it's like getting into a really high quality or a very hyped up startup today, right? Like you would say that most people today would decide to either start their own company or want to work with startups who are current. I mean, in those days, the front pages of newspapers used to be, placements at the IIMs and the kind of companies that are hiring. Today, it's about who's raising how much money in economic times, right? So I would imagine that would also have been a big reason why you decided. So yes and no, because those days the charm used to be international placements. Yeah. So right. I'm actually a couple of years before the wave you're talking about of investment banking. Got it. So I'm talking about 2003 when the summer interviews were happening, 2003 November. And उस समय तो actually वो market की peak cycle भी जो bull cycle थी वो शुरू भी नहीं हुई. The TCS IPO for example was I think a few months after this. So TCS IPO in that so it was just that कि हाँ यार investment banking पता नहीं क्या होती है but finance में होती है तो चलो अच्छा है जाके करेंगे. But वो those 2 months again were, it was something that I really enjoyed. I said कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं. तो आ गए वापस समझ के बाद और बोल दिया सबको कि भाई अब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करेंगे और कुछ नहीं करना. But you didn't find given that you branded yourself as a lazy guy, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इतना मुझे पता है, मैंने नहीं किया कभी, पर लेजी लोग तो नहीं काम कर सकते वहाँ पे. So that is true. And how did you decide कि नहीं यही करना है मुझे? तो because 16-18 घंटे काम तो करवाया होगा even in the internship. तो उस समय इतना नहीं होता था, but in those 2 months there was an IPO of a company called NDTV, the news channel. उसका IPO हुआ था जो कोटक ने किया था. मेरे को ज़्यादा काम दिया नहीं जाता था, मैं आसपास देखता था लोगों को देखते हुए काम करते और खुशी होती थी. 1-2 चीज़ें जो करवाई गई थी उसमें बहुत मज़ा आया था. तो दिस NDTV का बुक बिल्डिंग होती थी. अगेन नाउ वी हैव टूल्स टू डू ऑल ऑफ दैट. उस समय देयर यूज्ड टू बी अ गाय हु यूज्ड टू सिट आफ्टर द IPO क्लोज्ड एंड ओवरनाइट कोलेट एवरीथिंग एंड कीप इट रेडी. तो मैं उसके साथ बैठ गया था कि यार मुझे भी तो वो फील आनी चाहिए कि मैंने कुछ किया है, और बड़ा मज़ा आया. मतलब इट्स कॉल इट सम वियर्ड प्लेजर्स कि सुबह 4-5 बजे घर जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ यार मैंने फोड़ दिया, कुछ तो काम कर रहा हूँ. तो एनीवेज तो आई लाइक्ड दैट. आई थिंक वो किक मिल रही थी उसको देख के. एंड देन आई वेंट फॉर अगेन लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड इन द IPO एलोकेशन प्रोसेस. बट इन दोज डेज द बैंकर्स यूज्ड टू डिसाइड in your institutional category. So your IPOs have these 3 categories: institutions, non-retail and retail. Institutional category में किसको कितना stock मिलेगा used to be discretionary. तो bankers used to decide. And I had heard stories कि भाई उसमें bankers literally fist का fights हो जाती हैं, लोग मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हाथापाई पे उतर जाते हैं. तो मैं भी चला गया था एक मीटिंग में, मेरा बॉस ले गया था. It wasn't so bad, but yes, you could hear raised voices and all that. मैं कहा यार ये अच्छा लग रहा है, काम कर सकते हैं. Came back, second year is full of elective courses. So I took all the elective courses on M&A, investment banking. And because you believe you are now a finance stud, I took this course called financial derivatives. This was a term 5 course. So out of the 6 terms, your 4 get graded for placements, or in those days it used to be the case. 5th term people go for exchange. So to keep a level playing field, 5th and 6th term, they don't include sometimes for your term, this thing. अभी तो grades देखना ही मुझे लगता है बंद कर दिया होगा लोगों ने. बंद कर दिया है. I mean because people enter campus and placement starts literally like 20 days, 30 days after campus is begun. Things might change now. Now that everybody's saying that the next bull run is here. But maybe. But yeah, I mean it's literally the importance of academics to that extent has reduced. I wouldn't say it's gone away completely. But in a lot of campuses, placements start even before the first term का exam starts for summers. So grades आप बोल रहे हो ना, grades थे मेरे पास पर allowed नहीं थे. अब तो है ही नहीं. अब तो है ही नहीं हाथ में भी. So it's also very different. So things are changing, yes. So anyways, so coming back to financial derivatives, I scored a grand total of, out of 4 grade points, I scored a grand total of 0.5. And so to answer your question, why I didn't do trading.
दैट टाइम आई रियलाइज कि यार ये होगा नहीं मुझसे. प्लस देयर वर नो ट्रेडिंग रोल्स इन इंडिया. आई वाज वेरी वेरी फोकस्ड फॉर. Because the markets weren't deep enough either, right? They weren't deep enough. There were no trading roles. Trading roles were international. I was that son की guy who said कि यार मुझे तो इंडिया में ही रहना है. Investment banking करूँगा, इंडिया में करूँगा. So when it came to our final placements, Kotak hadn't given PPOs till then. They didn't give a PPO. I said I'll apply only to investment banks. I did not apply to any other company. Investment banks on campus used to be DSP Merrill Lynch, used to be Kotak and used to be ICICI Securities. तो 3 कैंपस से अप्लाई किए थे. 2-3 जो कैंपस पे आते नहीं थे उनको बाहर से अप्लाई कर दिया था. यू हैव टू आस्क योर प्लेस कम एंड ऑल दैट. बट एंड आई अप्लाई टू अ कपल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स, HSBC एंड BNP Paribas, कि ये जब आ जाएंगे फॉर बाय एनी स्ट्रोक ऑफ लक इफ आई क्लियर द इंटरव्यूज आई विल टेल देम मुझे इंडिया में प्लेस कर दो. सो ऐसे करके 5 कंपनीज में अप्लाई किया था. ग्रेड्स वेड्स ठीक नहीं, एज आई सेड नंबर तो आ जाते थे. तो अबाउट 10th रैंक्ड इन कॉलेज अगेन. तो लोगों ने बोला कंसल्ट अप्लाई कर दो, बट कंसल्टिंग कभी करनी नहीं थी तो इसलिए अप्लाई नहीं किया. एनीवेज सो DSP के मेड द ऑफर. उससे पहले HSBC वगैरह डे 0 थी, उसमें गया कर लिया. तो उन्होंने आई क्लियर दोज. देन दे सेड व्हाई डोंट यू, HSBC सेड कम टू लंडन और कम टू हांगकॉन्ग. मैंने कहा यार मुझे तो जाना नहीं है बाहर, इंडिया में रहना है. तो दे सेड ठीक है इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट रोल है, करोगे? तो मैंने कहा नहीं, मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है. आई वांट टू डू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तो एनीवेज वो नहीं हुआ. BNP Paribas में दे वर गिविंग सम ट्रेडिंग रोल. मैंने कहा वो तो चमकता ही नहीं है. तो करके फिर DSP. I mean, you are just talking about a very different time. इतना choice नहीं मिलता आजकल. You have to take the offer that you get. I mean, even at places like. So I have some different stories that when companies go to campuses, some of these campuses, companies को choice नहीं मिलता है. I know that. So that was the thing till about 2011-12ish, and then post that. I mean, I think the economy also tanked. Batch sizes went up, so the pressure on placements was so much that they couldn't continue. The companies became started having more choice at some point of time. But again, I think since you're all optimistic, I guess this time is returning again. Yeah. No, so I think if you have to talk about today, choices बढ़ गई हैं. But in terms of, it's not about jobs, it's about your career. Now you have far more choices. You can do a lot more things. As Ankit mentioned, right? You're not fixated कि मुझे IIMs जाना है या मुझे ये MBA करना है, ये है. There are so many more options in terms of courses, so many more avenues to do those courses. That in that sense, I think, and the big thing, I know I'm digressing a bit, but the big thing is now I believe that the job market is far more democratic. Larger institutions may still go for ये branded institute से आया है या ये करके आया है. If you look at the startup world, yeah, we are very, the way we hire, we don't care so much कि ये बंदा IIM से है और ये IIM से नहीं है या ये IIT से है versus non-IIT से है. It now depends on what you have done. So before we come to the startup journey, just quickly on the iBanking thing, you finally did go to Merrill Lynch, although they didn't offer you, they offered you a wealth management job, but. No, that was HSBC. That was HSBC. Okay. So you got into Merrill Lynch. So DSP Merrill Lynch came on campus for an India investment banking role. मिल गया उसमें job. I joined it. I spent 11 years there in terms of investment banking. Again, great decision because काम बहुत enjoy किया. Which was the biggest deal that you worked on? Or what gives you the biggest kick when you think of those 11 years? Yeah, so I was going to say that, I would have worked on really large deals, but my favorite deals would be amongst the smaller deals. So, you guys would have heard of a company called JB Chemicals. This was recently acquired by KKR, I think a year and a half back. Way back in 2010, 2011, JB Chemicals sold their Russia business to J&J. So we advised them. I was leading that transaction. My most favorite transaction. Here's an Indian company which is selling brands to the world's largest brand manager, J&J. So fabulous experience in terms of, what also happens is larger companies, when you advise them, they also have their battery of advisors, internal and external. So you have a certain role to play. When you talk about smaller sized companies, your role becomes disproportionately larger. There you're dealing directly with the founders. They are listening to you. If they believe you're a trusted advisor, that builds a certain kind of relationship. And that's a relationship I've carried till today. Did you really enjoy all 11 years, or did you find it pressurizing? Did you think it had an impact on your personal life or health? Or do you think that no, you were really meant to do that for that long? And
you really enjoyed the whole experience? Again, this is something that you all will experience or would be experiencing. No 2 days are the same, right? You're enjoying some days, you're not enjoying some days. So 11 years is a long time to say that, you can never have an 11-year bull run. Let's put it this way. So you have your ups and downs. I think I started well. We were 6 people who were hired in that year. Probably the largest batch we would have hired, or rather 5, 6, 7, 2, 3 years were the years where we hired these many people. Then, of course, its team started becoming smaller. The experience was great. I think there were times when hours were long. A lot of times where hours were long. Now there have been these concepts of bringing in work-life balance, bringing in these regulations, if I can say so. So large banks now follow regulations of X number of hours per week, which is still 100. But in those days, we didn't have those regulations. But to be honest, when I look back, the hours never impacted me. I was enjoying myself. So अगर काम अच्छा है तो I wouldn't mind putting in the long hours. The personal life, I think, touch wood, I was able to manage it well. It also, the way I see it is, when you go to these high pressure jobs, so-called high pressure jobs, the key is to build that trust in the system, right? Trust. You have to become that trusted person for your seniors, because then they will give you the leeway. Ultimately, if I am delivering to my boss, he was always fine कि भाई तुम्हें कहाँ से करना है, कब कर, मतलब डेडलाइन ये है, डेडलाइन तक काम हो जाना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो, घर जाके कर रहे हो, it doesn't matter. And I think that's a very, very important kind of skill to gain, that how do you build that trust in the system. And I was talking to someone who recently explained this to me in a very nice concept, that trust is never built with some large thing. Trust is built by small steps. So first day, it's not that your boss will come and say कि यार ये कर देना कल सुबह तक, I am not going to see it also. There will be some micromanagement. Second, once you deliver it once, second time, third time, fourth time, probably after the 5th or 6th time, boss will know कि यार ये कर लेता है काम, so I don't need to bother. He'll or she'll start taking a step back, and you'll start getting your freedom. So I think to a large extent that helped me. The second thing I've always maintained is, organizations, when a designation doesn't have any meaning, and you should therefore not bother so much about designation. What is important is how many people are working with you or as a part of your team, because that gives you the flexibility to manage your time. आप अगर प्रेसिडेंट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वाइस प्रेसिडेंट हो, डायरेक्टर हो, लेकिन इफ़ यू आर द जूनियर मोस्ट इन अ टीम, इट डजेंट मैटर कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप जूनियर मोस्ट हो, आप सारा काम कर रहे हो. और आप अगर एसोसिएट हो, लेकिन नीचे आपके साथ उस डील पे 3 और एनालिस्ट स्टाफ्ड हैं, तो आप राजा हो. फिर आपको पता है कि इट्स लाइक सेइंग कि यार ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो यू कैन स्टिल से कि यार प्लीज़ तू ये कर दे, मैं कुछ और काम कर लूँगा. So which is not to say you palm off the work to them, but you get a lot more flexibility of managing the workflow than you would get if you were the junior most.